ओडिशा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विशाल कुमार देव कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस इवेंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हमने इसे सीओपी के आधार पर बनाया था, जिसका मकसद भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक जैसा प्लेटफॉर्म बनाना था। इसी तरह ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का कॉन्सेप्ट बनाया गया था। हालांकि शुरू में हमें लगभग 17 राज्यों से कंफर्मेशन मिला था, लेकिन आखिरी समय में एयरलाइन की दिक्कतों, खासकर इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से 7 राज्य ही शामिल हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो जो इस इवेंट का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था उसके बारे में मैं बता दूं। हमने इसको मॉडल किया था कॉप, जैसे कॉप होता है, वी वांटेड टू हैव एन इवेंट ऑन सिमिलर लाइंस एज द कॉप फॉर द एनर्जी सेक्टर फॉर इंडिया. So therefore this global energy leader summit was conceptualized, and while we had got confirmations from about 17 states, because of the last minute airline problem, Indigo flights getting cancelled, only 7 states could make it. The Union Minister for New and Renewable Energy, Sri Prahlad Joshi ji, was here, and we had 2 honorable ministers for power of Rajasthan and Delhi, and of course our honorable Chief Minister had come. So we had representatives from 7 states, secretaries and other senior officials, but we missed the presence of the other states. And the theme, there were 3 themes of the summit: sustainability, primarily resource adequacy, how do we meet the demand, the rising demand, how do the states consistently meet the demands across all seasons. The second was balance, primarily economic growth without compromising on ecological imperatives. And the third was innovation, how do you use AI, machine learning, new technologies to improve energy efficiency, to improve grid management, etc. So this was all in all. We had a large number of very fine speakers from India and from abroad, and the discussions were very, very meaningful and fruitful.